40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा। क्षमता नहीं। हिंदू मानते हैं कि 40 दिन में भोजन करने से एक बूंद वीर्य बनता है। सरासर असत्य, झूठ बात है, उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। लेकिन बच्चों को डराने के लिए ईजाद की गई है, और बच्चे डरते हैं वो तो ठीक है, बूढ़े भी डरते हैं। I understand the confusion. Let's talk about it. In June 2011, a website was launched by a community of men to serve as support group for those who wish to give up pornography, mainly masturbation. The main motivation behind the forum was to help men overcome the addiction of masturbation. The moment you will sign up for this website, a timer will start recording your time till the time you masturbate again, with the idea of maximizing the day you don't masturbate. This process is called Nofap. Millions of people signed for this website in hope of overcoming the addiction of masturbation, and almost everyone relapsed. It was not that big deal, but they made it a big deal. There are thousands of testimonials where people directly went into depression after relapsing. They felt as if they have done severe crime. The guilt was so intense. As a result, this NoFap community failed badly. Later, a new concept emerged as No Nut November, which advertised abstinence from pornography and masturbation in the month of November. But unfortunately, this failed again. All was happening in the West. At the same time, इंडिया में क्या हो रहा था? हम जो दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट पॉर्न कंज्यूम करने वाले देश हैं, हिंदुस्तान पहले रैंक पर है पॉर्न साइट देखने में। पहले पाकिस्तान था, हमने अब उसे पीछे कर दिया। हम सभी से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मास्टरबेशन करना चाहिए या नहीं। So, can we have the truth about masturbation? टू माई सरप्राइज सभी के पास इसका आंसर था। बी इट ए स्पिरिचुअल लीडर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, फिटनेस ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और प्रॉब्लम सॉल्वर, मोस्ट पीपल मोर और लेस यही कह रहे थे कि मास्टरबेशन इज हेल्दी। मास्टरबेशन आप करते हो तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, लेकिन सच बात ये है कि हस्तमैथुन ह्यूमन सेक्सुअलिटी या लैंगिकता का एक बहुत ही सामान्य हिस्सा है। மெடிக்கலி மாஸ்டர்பேஷனுக்கு ஒரு டாக்குமெண்டட் சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்ல। तथ्य ये है कि मास्टरबेशन एक नॉर्मल और नेचुरल फिनोमेना है, कुदरत की देन है। एंड अगर आपका कंट्रोल है, देन इट इज नॉट हार्मफुल। That masturbation is a natural process. It starts at puberty when a young boy becomes an adult and starts handling his organs. Then accidentally he masturbates because it is pleasuring him. So masturbation is nothing but mutual pleasuring, and it results in removal of semen from his system, and it is accompanied by pleasure. Now when this is done repeatedly, number of times, repeatedly, 5 times a day, 6 times a day, obsessive compulsive disorder, it becomes an OCD, then it is harmful. But the key word here is control, and the most people is struggling with this control. तुम्हें लग रहा है जो सैनिक लड़ाई के मोर्चे पे लगा हुआ है और जिसके कान के पास से गोलियां निकल रही हैं साए साए, वो सोच रहा होगा सेक्स के बारे में? तो वैसे योद्धा बन जाओ ना। अगर लोगों की लाइफ इतनी इंटेंशनल होती तो मास्टरबेशन की हैबिट ही नहीं होती ना। तो लाइफ के कंपैरिजन का कोई बेसिस भी है? आर्मी का जवान जब कॉम्बैट ऑपरेशन में होता है, वैसी लाइफ किसी की हो सकती है क्या? इवन आफ्टर ऑपरेशन उनकी भी लाइफ ऐसी नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि उनमें से कुछ को मास्टरबेशन की हैबिट हो, और अगर लोगों की लाइफ इतनी इंटेंशनल होगी जैसा कि आचार्य बता रहे हैं, तो लोग इनको क्यों सुनेंगे? रियलिटी ये है कि अनफॉर्चुनेटली मास्टरबेशन की हैबिट सभी को लग जाती है। दिस इज द बेसिक बायोलॉजी, क्योंकि इट गिव्स अल्टीमेट फॉर्म ऑफ प्लेजर, एंड आफ्टर ऑल हम सभी प्लेजर के पीछे ही तो भाग रहे हैं, इसीलिए इस हैबिट को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बट द क्वेश्चन अगेन रिमेन, इज मास्टरबेशन गुड और बैड? द होल कंफ्यूजन अराउंड मास्टरबेशन इज बिकॉज ऑफ सीमेन। टू अंडरस्टैंड दिस कंफ्यूजन वी हैव टू गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ वीडियो। 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा। क्षमता नहीं। हिंदू मानते हैं कि 40 दिन में भोजन करने से एक बूंद वीर्य बनता है। सरासर असत्य, झूठ बात है, उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं।
लेकिन बच्चों को डराने के लिए ईजाद की गई है। और बच्चे डरते हैं वो तो ठीक है, बूढ़े भी डरते हैं। When lab testing was done, it was found that the semen contains mostly water, protein, citric acid and certain amino acid which nourishes the brain. ये इस बात को वेरीफाई करता है जो एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि if you practice brahmacharya, semen actually move up to the brain. And that semen, if you retain it, it moves upwards in the form of ojas, as you have rightly said, creative energy. So that nourishes your cells, your mind, everything. And it increases your intelligence and intellect. People like Tesla and Elon Musk have said similar things. Then a great deal of, like, a massive amount of thinking, like truly stupendous amount of thinking has gone into sex. Without purpose, without procreation. Which is actually quite a silly action in the absence of procreation. And they even practice semen retention. Even in Indian scripture, there's a mention of Lord Hanuman and Lakshman who practiced brahmacharya. Montesquieu, a Chinese healer, at many instances talked how semen retention is important for humans. Sexual energy is the one that in the Chinese we call Jingqi, mean energy. 1 to 3 o'clock in the morning. And that is the time the sexual energy recover, or we call replenish. So the sexual energy we call the essence of life. Okay, so you wake up, your sexual hormone produced, so you have a lot of jing qi. I feel fresh, I feel good, I have a lot of energy, because the sexual energy is our life force. It moves us every day. So you sleep later than 1 o'clock to 2 o'clock, now the sexual energy cannot recover because they need to producing enough sexual hormone to run your next day. But modern science does not confirm any of this. और शायद इसलिए भी because their research has not gone that far. But modern science ने masturbation को लेके बहुत सारी myth create कर दी है। मेल और फीमेल दोनों में मैस्टरबेशन होता है। मैस्टरबेशन उसे कहते हैं कि बिना सेक्स के सेक्स की फीलिंग करना मैस्टरबेशन कहलाता है। And people with zero knowledge about these things preach anything publicly. और इसमें क्या करता है, पुरुष अपने स्पर्म को जानबूझ के बाहर निकालता है। अगर ये ज्यादा कर देता है पुरुष, जब कभी भी ज्यादा ओवर मैस्टरबेशन हो जाता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है, फिर उसको एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे जाके, और ये एक प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। No, there is no clinical evidence that masturbation can cause cancer. Masturbation से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता नहीं है, कम होता है। Even the research talk completely opposite. मैस्टरबेशन रेगुलर, सेक्स रेगुलर करने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है, आपका मूड अच्छा रहता है और उसके कई सारे और बेनिफिट भी हैं। Similarly, masturbation does not cause hair loss. ना ही इससे हेयर लॉस होता है, ना ही इससे हेयर लॉस बढ़ता है। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि DHT की वजह से, साथ ही साथ सीमेन के बाहर निकलने की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इससे हेयर लॉस हो सकता है। बट आज तक ऐसी कोई मेडिकल स्टडी नहीं हुई है जिसमें मैस्टरबेशन को हेयर लॉस का कारण बताया गया हो। Loss of vision or muscle loss. But excessive loss of semen through masturbation can stimulate these things. Because through semen, a lot of protein and vital nutrients come out of body. And there are cases of masturbation-induced erectile dysfunction and premature ejaculation. Unfortunately, masturbation absolutely can lead to erectile dysfunction, premature ejaculation, and delayed ejaculation. And excessive of it could be fatal. Even a person died because of heart attack as he masturbated 62 times continuously. So the dopamine release during masturbation is so damn pleasurable that masturbation becomes addictive. And this addiction is unhealthy. Anything done in excess is going to create a problem. Human tendency is always like this, that if you derive pleasure high out of something, you want to do it more and more till it comes to a level that becomes your addiction. जब आप addict होते हो, you do it many times that consume a great deal of time and energy. Just remind the time you wasted to find a perfect porn video to masturbate. Leave science and Ayurveda aside. Just tell me, when you masturbate, don't you feel tired, feel energyless, and excessive of it can cause pain in your sexual organ? Here, with addiction, you are not just destroying that organ, but destroying actually your whole life because of that. Tell me which healthy habit causes loss of energy and makes you tired. No matter how much we talk about it, deep down we know that this isn't right. That is why you reach till here.
So to break this habit of masturbation, you have been fed with wrong information again. Like porn मत देखो, खुद को बिजी रखो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, दोस्तों से बात करो, blah blah blah. It will not work. क्योंकि masturbation gives you ultimate pleasure. और इसको छोड़ने के लिए जो बातें बताई जा रही है वो सिर्फ शब्द है. To leave a habit which gives you pleasure, you have to associate it with pain. So the next time when you are about to repeat this habit, the pain comes in between. जब भी आपका masturbation का ख्याल आए और कोई भी ऐसे thoughts आए, start doing push-up or go for a run. Just put yourself in pain every time you feel like masturbating. And this habit of masturbation will weed out from your life. जब तक इस masturbation की habit को आप control ना कर लो, every time you feel even horny, give yourself a stubble pain. It could be anything like jumping continuously, running vigorously, or anything. Or try any yoga poses or plank for 5 minutes. In this way, your brain will get rewired and the urges will eradicate. One more thing that you can keep in mind, apart from the advice that these people give you about how to leave the habit of masturbation, if at all you are not able to control your urge, then masturbate without watching any pornographic material. If you do not use this material, the act of masturbation is so boring कि आप उसको अगली बार ऐसे ही नहीं करोगे. हो सकता है एक दो बार फिर से masturbate कर लो, but soon you will find the act boring and irrelevant to the kind of person you are. And lastly, you need to believe that you have to come out of it. A belief does more than anything else. कोई पशु हस्तमैथुन नहीं करता, कोई जरूरत नहीं. ये कोई पाशविक काम नहीं है, ये बड़ा महान मानवीय कार्य है हस्तमैथुन. ये कोई पशु नहीं करता. अगर तुम्हें पशुओं से ही तौल करनी है तो इस तरह के कामों का खूब प्रचार करो, महात्माओं को कहो फैलाओ हस्तमैथुन लोगों में, क्योंकि ये काम तो सिर्फ आदमी ही करता है. धन्य है मनुष्य